to share with you the outstanding export performance for the year 22-23, with India's overall exports scaling new heights at $770 billion, registering a 14% growth over the previous year, an all-time high record, growing from $500 billion in the year 2020-21 to $676 billion in the year 21-22, and now registering a further growth of nearly $100 billion to cross $770 billion. In such challenging times, when the world is seeing softening of international trade, slowing of international trade, when there are recessionary conditions in the developed world, when there is unprecedented high inflation in many developed countries, there was concerns about the export performance in the year gone by. There were concerns because of the conflict in Ukraine. There were concerns that piled up inventories in the developed world may not help us achieve such a stupendous performance. Prime Minister Shri Narendra Modi in August 2021 had given a clarion call to Indian business persons, to our missions across the world, to our industry and service stakeholders, to take the country's goods and services across borders to newer markets with newer products and newer services also supporting the export effort. The One District, One Product initiative of Prime Minister Modi helped us identify specific jewels in each district in India, and the district being developed as an export hub truly transformed the landscape of India's export performance. It is indeed a matter of satisfaction that we have grown both in goods and services. Our goods export, which was $294 billion in the year 2021, grew to $422 billion in the year 21-22 and has further grown to $447 billion in the year just gone by. Our services exports, which were $206 billion in the year 2021, grew to $254 billion in the year 21-22 and has now further grown to scale new heights, having crossed $323 billion of services exports. This is truly a sign of India's expanding our international footprints, thanks to the leadership and vision of Prime Minister Narendra Modi, the wonderful response that we get from across the world when an Indian exporter goes to any part of the world. The entire universe, the entire globe today looks up to India as a ray of hope, as the bright star. Very clearly, they have confidence
and trust in Prime Minister Modi's leadership, and they look upon India and India's business as trusted partners. India is looking forward to engaging even more deeply with countries around the world, with the developed world, with developing countries, and contributing to the world's progress and prosperity as we grow jobs in India, as we grow economic opportunities in India, as we ensure inclusive and sustainable growth for every Indian in the country. This is a fitting export performance in the 75th year of independence. As the nation celebrates Azadi Ka Amrit Mahotsav, it is a tribute to the nation's resilience that we have achieved a 770 billion export. We enter into the Amrit Kal with the Prime Minister's commitment and call to the nation to work with a spirit of dedication, with a spirit of duty to make India a developed nation by 2047 when we celebrate 100 years of independence. When we look at the overall economic scenario, where GST collections are high, where exports are at a record high, where inflation has come down within the Reserve Bank of India band and is last reported to be 5.66%, with strong foreign exchange reserves exceeding $600 billion, the fastest growing economy, large economy in the world, clearly reflects the mood of the nation, the confidence that the people of India, that the businesses of India and the entire world has in Prime Minister Narendra Modi's leadership. I would like to thank Prime Minister Modi for his encouragement, his support to all our exporters. I would like to thank all the exporters, businesses, industry, service providers, the millions and millions, crores of workers, our farmers, our medium, small and micro industries and MSME sectors for their contribution to make this performance. Thank you very much. आज बहुत संतुष्टि की बात है कि भारत ने एक ऐतिहासिक निर्यात में आंकड़ा पार किया है। 770 बिलियन यूएस डॉलर्स का निर्यात गत वर्ष में 2022-23 के वर्ष में भारत से विश्व के अलग अलग देशों में हुआ। एक प्रकार से लगभग 60 लाख करोड़ से अधिक निर्यात एक ऐतिहासिक भारत की उपलब्धि रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे सभी निर्यातकों का धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे देश में लाखों करोड़ों कामगार, किसान, सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग के उद्योग, हमारे स्टार्टअप्स, हमारे उद्यमी, हमारे उद्योजक, जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस शानदार लक्ष्य का प्राप्ति की है। अगर हम पिछले दिनों की देखें तो 2 वर्ष पहले मात्र $500 बिलियन का निर्यात भारत से हुआ था। 2 वर्ष के भीतर 500 बिलियन से लगभग 770 बिलियन से अधिक निर्यात अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। सेवा के क्षेत्र में, सामान के क्षेत्र में, दोनों में अमूलचूल वृद्धि हुई है।
इस देश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हर जिले के जो खास सेवाएं या खास वस्तु होती है उसको जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में डेवलप किया, जिससे आज हर जिला निर्यात का एक केंद्र बना है, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब के रूप में उभरा है और देश में एक नई जागरूकता पैदा हुई है। एक लोगों को समझ में आया है कि नए नौकरी के साधन, नए काम के साधन, नए तरीके से आज भारत विश्व में आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास के साथ, ये भारत विश्व के साथ संपर्क भी बना रहा है और व्यापार भी कर रहा है। जो पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की साख नई ऊंचाइयों तक पहुंचाई है, जो आज विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और हर देशवासी और देश के उद्योग जगत के ऊपर आज पैदा हुआ है, आज जो देखने को मिलता है, ये अपने आप में भारत के लिए एक बहुत गर्व की बात है। हम पूरे विश्व में जिधर जाते हैं, आज भारत के पासपोर्ट की अलग अहमियत है, भारत से आने वाले हर व्यक्ति की अलग इज्जत है, पहचान है और विश्व भर में जो 3 करोड़ से अधिक भारतवासी रहते हैं, वो भी एक प्रकार से इस अभियान में जो योगदान दे रहे हैं उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। देश के जो मिशंस हैं, जो एम्बेसीज हैं, जो कॉन्सुलेट्स हैं, जो हाई कमीशंस हैं, उनको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया लक्ष्य दिया था कि वो व्यापार, निवेश और पर्यटन, इन तीनों क्षेत्रों पे ध्यान दें, इन तीनों क्षेत्रों में वृद्धि के लिए परिश्रम करें। और मुझे बहुत आनंद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सहयोग विदेश मंत्रालय का माननीय जयशंकर जी का, वित्त मंत्रालय का माननीय निर्मला सीतारमन जी का और एक होल ऑफ द गवर्नमेंट, पूरी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें मिलकर जिस प्रकार से इस मुहिम में जुट गई हैं, अब निर्यात चल चुका है। आजादी के अमृत महोत्सव में 75 वर्ष आजादी के जब हम मना रहे हैं तो $770 बिलियन, 60 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात अपने आप में एक बहुत संतुष्टि भी देता है और आगे के लिए आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। आजादी के अमृत महोत्सव से हम प्रेरणा लेके जो अमृत काल में प्रवेश किए हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण हम सबको दिए हैं, जिसमें कर्तव्य भावना से इस देश को एक विकसित देश बनाने का प्रण पूरे देश ने लिया, 140 करोड़ देशवासियों ने लिया है। मैं मानता हूं उसकी एक बहुत अच्छी शुरुआत इस वर्ष में हुई है। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में एक रिकॉर्ड ऐतिहासिक जीएसटी कलेक्शन, ऐतिहासिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, ऐतिहासिक $600 बिलियन से अधिक फॉरेन एक्सचेंज का भंडार, एक ऐतिहासिक परिस्थिति जिसमें भारत तेज गति से आगे बढ़ते जा रहा है, विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। विश्व में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली व्यवस्था का हमारा एक कीर्तिमान कायम है। महंगाई फिर एक बार 6% से घटकर 5.66% हो गई है। हर प्रकार से भारत एक विश्व के लिए अनोखी व्यवस्था है, बहुत निर्णायक नेतृत्व के साथ और आत्मविश्वास के साथ भारत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Well, the overall import number
is $892 billion, which is also very much reflective of the growing economic activity in India, which has also supported our exports in a big way. As the world moves into global value chains, we will be looking at expanding our footprint both in imports and exports. And that is what strengthens our capabilities to be a trusted supplier of goods and services in resilient and stable global value chains. The number also shows that our current account deficit will be very much under control given the fact that our remittances have crossed $100 billion. We have very good inflow of investments, and several sectors have contributed to this excellent performance. We find that in the services trade, we have had huge growth in IT services, accounting services, business processing. In the merchandise exports, 17 of the 30 key sectors exhibited positive growth during the last year. These included oil mills, electronic goods, which is a matter of great pride for India, where we have crossed $11 billion of mobile phone and associated equipment exports, an all-time record. Petroleum products, tobacco, oilseeds, rice, cereal preparations and miscellaneous processed items, coffee, fruits and vegetables, other cereals, tea, leather and leather products, ceramic products and glassware, marine products, drugs and pharmaceuticals, organic and inorganic chemicals, and ready-made garments of textiles. All these 17 key sectors have registered growth, which reflects that our farmers, our labor-oriented sectors are the largest gainers of exports from India. Under imports, do you have year-on-year numbers to Sure. The imports in merchandise has grown from 613 billion to 714 billion. Merchandise imports has increased from 613 billion US dollars to 714 billion US dollars, whereas services imports has grown from 147 billion dollars to 178 billion dollars. The IMF projected 2.8% global growth. Now, I have two questions. One is, what does it mean for our merchandise and services exports this year? And two, will it be a year when services exports will, as in the coming financial year, when services exports will cross the 400 billion mark? Friends, when Prime Minister Narendra Modi addressed over 180 missions on 6th August 2021, addressed all the major chambers of commerce, industry associations, all our export promotion councils, the MSME industry associations, and gave the call that we have to take exports as a focused area to help India's growth trajectory. At that point of time, India was at about $498 billion, as I said, in the year 2021.
At that time, we had also started making plans of how we would grow India's exports going forward. As I can show you from this graph, we had at that point of time prepared a long-term trajectory to take India to $2 trillion of exports by 2030. It was a very ambitious target, unbelievable for many people, including friends from the media. But Prime Minister Modi had the courage of conviction. Our missions across the world gave unstinted support in policy measures, in outreach, support from the districts who also wanted to participate with newer products and approach newer markets across the world. We had drawn up a plan, and I'm happy to share with you that as per that plan, and that plan is right here before you, we had expected the year 22-23 to be at $772 billion. By the time the final services numbers comes in, and since currently what I'm giving you has a March 23 services number at an estimate, I will not be surprised if we will cross $772 billion. When I talked to the chairman of the Federation of Indian Export Organizations and other export promotion councils yesterday, I was trying to be cautious considering the global challenges, the war continuing to be a serious concern, many countries still grappling with high inflation, particularly in the developed world, most developed countries not registering any significant growth. I was wanting that we should probably taper down our expectations, but I can only tell you that these numbers and the Honorable Prime Minister's leadership is encouraging our exporters to be even more bold and audacious in their goals. And yesterday they have assured me that they will ensure that the performance in the current year will be significantly better than the year gone by, and they will persevere so that the growth momentum continues as we work with each of these sectors, as we engage with them, as we engage with all the missions in the 180 countries. We'll draw up more specific plans, sectorally, country-wise, and come up with the current year's targets and expectations. सर जब नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ था तो कई जो एक्सपोर्ट काउंसिल्स हैं उनके चेयरमैन ने बोला था अगले साल करीब जिस हिसाब से ग्रोथ है इंडिया की हम $900 बिलियन का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगले साल के लिए आपकी क्या उम्मीद है? जैसे मैंने कहा, ये चर्चा करके हम कोई हवा में आंकड़ा देने वाली सरकार नहीं चलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अहमियत देते हैं इस बात को कि अपने सभी स्टेक होल्डर्स को, पूरी सरकार में लोग जो काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, विश्व भर में जो अलग अलग मिशंस में हमारे राजदूत हैं, सबके साथ चर्चा करके हमने अपने टारगेट सेट करने चाहिए। ये जो परिणाम है ये कोई अकाशा, इट्स नॉट अ सडन परफॉर्मेंस, इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस जो ऐसे ही अचीव हो गया है। कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये आंकड़ा हो गया है। इसमें सबने कड़ी मेहनत की, प्लानिंग के हिसाब से आउटरीच किया। विदेशों में भी जो हमारे खरीदार हैं, जो हमारी सेवाएं लेते हैं, उनके साथ संपर्क बढ़ाया और एक फोकस्ड अप्रोच से ये परफॉर्मेंस अचीव हुई है। तो अगले साल की भी जब सबसे चर्चा हो जाएगी तो हम आंकड़े बनाएंगे, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल, हर एक चीज़ संभव है। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि आपने हमें दिशा दिखाई है, तो उस दिशा में हम बाकी सबसे बातचीत करना शुरू करेंगे। How do you see this FTA is helping us in increasing exports, and if you can tell us about the progress in talks with EU as
ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दोनों देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट से एक देश ने पूरे विश्व को संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व के सामने नए भारत का एक चित्र रखा है। अब भारत का उद्योग, भारत के उद्यमी, भारत के स्टार्टअप्स, भारत के किसान, भारत के अन्य क्षेत्र विश्व में अपनी साख बनाने में पूरे आत्मविश्वास के साथ निकल पड़े हैं। पहले एक जमाना था कि विकसित देशों के साथ भारत में थोड़ा हिचक रहती थी, थोड़ा हेजिटेशन था कि हम अपने बाजार खोलेंगे तो कहीं बहुत सामान बाहर से ना आ जाए, और इसके कारण हम विकसित देशों के साथ हम अपने आर्थिक संबंधों में बहुत कमजोरी से पेश आते थे। उसके फलस्वरूप 2004 के बाद आपने देखा कैसे चाइना और अन्य साउथ ईस्ट एशियन देशों से भारत का आयात बढ़ते गया। भारत में उन देशों से सामान बहुत बड़े रूप में आया, जिसके कारण भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्री एक प्रकार से उभर नहीं पाई, कमजोर हो रही थी। गत वर्षों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का कॉल दिया, जो उन्होंने गो वोकल फॉर लोकल का कॉल दिया, जिस प्रकार से उन्होंने कहा लोकल फॉर ग्लोबल, यानी निर्यात में भी हमारे इंडस्ट्री की, हमारे लोगों की क्षमता बढ़ाई जाए, जिसमें गुणवत्ता, क्वालिटी बहुत अहम भूमिका रखती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिससे हम बड़े रूप में पैदावार करें, चीज़ों को बड़े रूप में उत्पादन करें, तो हमारी कंपेटिटिवनेस, स्पर्धा में हम ठीक से खड़े हो पाएंगे, अपना सामान बेच पाएंगे, हमारी सेवाएं दे पाएंगे। इसके ऊपर बहुत बल दिया गया है गत वर्षों में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को देश के सामने, देश के समक्ष पेश करके एक नया उत्साह जागृत किया है देश में मैन्युफैक्चरिंग का। जो कोविड के समय भारत के सर्विसेज सेक्टर ने पूरे विश्व में जो जो कमिटमेंट दी थी उसको पूरा करने में सफलता पाई, और वो था डिजिटल इंडिया का रिजल्ट। थैंक्स टू डिजिटल इंडिया हम क्विकली ब्रॉडबैंड सर्विसेज लोगों के घरों तक पहुंचा पाए, कि लॉकडाउन में भी सब सेवाएं सबको मिलती रही, सर्विसेज की फैसिलिटी मिलती रही, जिसके कारण लोगों का विश्वास भारत के ऊपर बढ़ा। ये सब कारण है जिसकी वजह से आज भारत विकसित देशों के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर पा रहे हैं। यूके, ईयू, कनाडा, तीनों के साथ चर्चा तेजी से आगे बढ़ रही है। हमें समाधान है जिस प्रकार से बातचीत चल रही है। भारत भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अलग अलग क्षेत्रों में नए बाजार खोज रहा है। हमारे सेवा के क्षेत्र में भी नए अपॉर्चुनिटीज को इन एफटीएस के माध्यम से हमें काम करने का मौका मिलेगा। हमारे जो युवा युवती बाहर पढ़ने जाते हैं उनको भी सेवा करने का या एक्सपीरियंस पाने का बाहर मौका मिलेगा। जैसे आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में योगा इंस्ट्रक्टर्स, शेफ्स के लिए स्पेशल परमिशन मिली। जैसे आपने देखा कि जो भी पढ़ने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, उनको वर्क वीज़ा दिया जाएगा, जिससे वो कुछ अनुभव भी ले सकें, थोड़ी कमाई भी कर सकें। और जितना हम निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना व्यापार बढ़ाएंगे, उतनी देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, उतना ज़्यादा देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी आने से नौकरियों मिलेंगी, लोगों को काम के अवसर मिलेंगे, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को नए अवसर मिलेंगे, सेवा के क्षेत्र में वृद्धि के अमूलचूल संभावनाएं हैं। तो मेरे हिसाब से जो एक फाउंडेशन बना है भारत का, वो आज इतना मजबूत है कि उस फाउंडेशन के ऊपर जब हम ओवरले ऑफ ऑल आवर डोमेस्टिक पॉलिसीज रखते हैं और उसके ऊपर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साथ में जुड़ जाता है, तो ये कंबाइंड फैक्टर्स
along with the global leadership that Prime Minister Modi is giving, इटली के माननीय प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कहा कि ही इज द मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता है. ये इटली के प्राइम मिनिस्टर ने, और इटली के प्राइम मिनिस्टर जब ये कह रहे हैं, इसकी तो एक अलग अहमियत भी है. But there are reports that there are some issues coming on this India-UK thing. मुझे लगता है हेडलाइंस मीडिया को बनाने के लिए कुछ ना कुछ स्पेकुलेट करते रहने की ये आदत हो गई है. सर, रुपए के जरिए व्यापार शुरू करने की, दूसरे देशों के साथ व्यापार के लिए जो मुहिम शुरू किया गया है, उसमें कितनी प्रगति? साधारणतः ये वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है, पर आज कई विश्व के देश इस बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि जब दोनों तरफा व्यापार होता है, एक्सपोर्ट भी है, इंपोर्ट भी है, तो व्यापार में आप सामान को पहले रुपए से कोई और करेंसी में कन्वर्ट करो, फिर उस देश में जाने के बाद फिर वो वापस वहाँ की लोकल करेंसी में कन्वर्ट हो. इसी प्रकार से वहाँ से जो सामान आ रहा है वो भी 2 बार कन्वर्जन कॉस्ट होता है. इस सब से ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, समय भी लगता है पैसे को एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए. इन सब चीज़ों को रूपी ट्रेड के माध्यम से हम एड्रेस कर पाएंगे, और जो हमने डिजिटल टेक्नोलॉजीज में भारत में बहुत ज़्यादा तेज गति से प्रगति की है, उसके रहते मैं समझता हूँ कि रूपी ट्रेड एक बहुत आकर्षक का विषय है, और कई देश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ चर्चा में लगे हुए. बहुत बहुत धन्यवाद. So despite good exports, of course, great numbers, congratulations on that. We're still looking to preserving our local supplies. Does this mean we continue with the wheat export ban? Yes, wheat exports will continue for the present. But having said that, I am very happy to share with you that the procurement of wheat has started. It has started very well so far. And of course, we still have to get more numbers, but the first week's numbers are very satisfactory. And I do believe that we will have a good harvest despite the unseasonal rains. And we do believe that we will have to ensure adequate supplies for the Indian market. And once the procurement period is over, we believe that it will be important that inflation is also contained in the country, and therefore it's important that the wheat exports continue to remain banned. Sir, there are apprehensions on the FTA side, especially on the services side. There are apprehensions that this services demand from India will result in a large inflow of Indians into those markets. So are those fears unfounded, given that what we would be seeking is business visas for professionals and things like that, and that is a key concern coming from some of the countries? Well, I think some people mix up mobility and immigration. They are two separate subjects. Mobility is about expanding trade and business, about temporary visas, and people who come temporarily into a country, either for work or for studies or for trade. India is not seeking permanent immigration visas from any country. We are only looking to engage with countries on mobility. We are concerned only about our ability to give services or to go for business or investment through temporary visas, or as students through temporary visas, or to gain training in the post-study period, for which we have found a lot of acceptance
in all the countries with which we are talking. I may also like to point out that in the post-COVID world, more and more businesses and services are realizing that with remote working having been such a great success, it's no more necessary for people to relocate to foreign countries to provide services. In fact, this will open up huge opportunities for our young boys and girls in tier 2, tier 3 cities, smaller towns, from where people can remotely work and improve the competitiveness of India's services and help us support the global effort towards international exchange of goods and services. Thank you. ये एम्बार्गो है हाँ सर, yes, sir.